Hi guys, welcome back to the channel. So as you guys know कि पूरी दुनिया में there's a very high demand supply shortage of transformers. Like demand बहुत है and shortage बहुत कम है. And demand internationally as well as domestically is coming from two places. So domestically if we talk about it, first is कि the इतना बड़ा जो capex चल रहा है power T&D का, that is the number one driver कि transformers की need क्या है. And मेरे पहले वीडियो में I have explained कि what are the different types of transformers and वो actually किधर use होता है. And from that we understood कि power transformers that is used in HVDC or the more higher kV के transformers such as 400 or 765 kV के transformer, that is a place that we want to be in और जो company ये type के transformers बना रहे हैं हमें उनमें जाना है. And second we understood another demand driver is जो इंडिया में भी data centers बन रहे हैं, जो data centers के लिए जो power need है, तो फिर वो power need satisfy करने के लिए there is a need for transformer as well as in the export market में भी ये डेटा सेंटर्स तो उधर बहुत बड़े स्केल पे बन रहा है. सो उधर बहुत बड़ी नीड है ट्रांसफार्मर्स की. एंड उधर यूरोप एंड यूएस में भी क्या चल रहा है कि उधर का ग्रिड जो बन रहा था उसके भी रिप्लेसमेंट साइकिल आ रही है. सो ट्रांसफार्मर जो 40-50 ईयर्स की साइकिल रहती है, तो फिर वो बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स अभी उधर पुराने हो गए एंड उधर भी बहुत ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन चल रहा है. सो उधर भी देयर इज अनदर नीड फॉर ट्रांसफार्मर्स. एंड ये वीडियो जो है दैट इज नॉट अबाउट ट्रांसफार्मर्स बट इट्स अबाउट अ कंपनी दैट मेक्स अ वेरी इसेंशियल कंपोनेंट फॉर ट्रांसफार्मर्स. एंड वो कंपोनेंट है CTC और मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स. सो ये जो दो प्रोडक्ट है CTC एंड मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स, इसके बिना कोई ट्रांसफार्मर बन नहीं सकता या फिर कोई ट्रांसफार्मर चल नहीं सकता. एंड ये जो कंपनी बनाती है KSH इंटरनेशनल, इसी के बारे में विल हैव अ डिस्कशन टुडे. एंड इन टुडेज वीडियो व्हाट विल डू इज विल डू अ कंपनी स्पेसिफिक डीप डाइव ऑफ KSH इंटरनेशनल. वी लुक एट व्हाट आर द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी, इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर होते हैं, how the company is moving into very specialized kind of conductors and magnetic winding wires. And ये जो KSH International है, this company capacity wise is the number 3 company, but this company is the only company that is approved by your power agencies like NTPC, Power Grid. All of these big companies say this company has got the approval for making your CTC that goes into your transformers. And also exports में company is the number one. So company is also tapping into the AI data center, grid renewal, modernization, capex that is going on in the US. So आज के इस वीडियो में we'll understand exactly that. We'll do a company specific deep dive of KSH International. We'll understand what the CTC or this magnetic winding wires is. Then we'll look at kind of capacity the company is adding. We'll also look at the kind of numbers the company is planning to do in the next financial year. We'll look at the valuations and projections. So on that note, let's start the video. So in the first part of this analysis, what we'll try to understand is कि कंपनी का kind of entry barrier या फिर business में जो moat है वो डिस्कस करेंगे. So first of all अगर आप देखोगे, every transformer company, like every single transformer company that is doing a 2x to 3x kind of capex, even not if like कुछ companies तो 4x 5x kind of capex भी कर रहे हैं. So ये तो हमको पता है कि कंपनी के प्रोडक्ट को डिमांड है. अगर ट्रांसफॉर्मर मेरी एंड यूजर इंडस्ट्री अच्छा करेगी, देन KSH इंटरनेशनल विल ऑब्वियसली डू वेल. Now coming to the kind of entry barriers the company has. The thing about transformers is ना कि transformers उनमें बहुत there's a very approval cycle, certification cycle. जैसे अगर मैं कंपनी हूँ, अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मर पावर ग्रिड के पास सप्लाई करना है, तो फिर उसके लिए मुझे सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट की उतनी क्वालिटी है कि 30-40 साल मेरा प्रोडक्ट अच्छे से चलेगा, कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं आएगा, राइट. एंड ये कंपनी जो सप्लाई करती है KSH इंटरनेशनल, दैट इज़ अ वेरी की कंपोनेंट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर. सो अगर मैं ट्रांसफॉर्मर कंपनी हूँ, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, बिकॉज अगर आगे जाके कोई फॉल्ट होता है ट्रांसफॉर्मर में, देन उसकी लाइबिलिटी मुझ पे आएगी, ना कि KSH इंटरनेशनल पे. सो दिस इज़ वन थिंग कि जो ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करने वाला बंदा है वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, बिकॉज अगर उसका ट्रांसफॉर्मर डिफॉल्ट कर गया तो फिर कंपनी को डिबारमेंट मिल सकती है एंड बेसिकली धंधा जाएगा कंपनी का. तो फिर उसके लिए कंपनी वोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन रॉ मटेरियल क्वालिटी. फर्स्ट ये हो गया. सेकेंड, जो ट्रांसफॉर्मर्स के लिए होता है कि देयर अ अप्रूवल साइकिल एंड देयर अ सर्टिफिकेशन साइकिल. सेम थिंग फॉर KSH इंटरनेशनल. कंपनी के प्रोडक्ट्स अप्रूव होने के लिए उसको PGCIL, NTPC, ऑल ऑफ दीज बिग कंपनी से उनको अप्रूवल लेना पड़ता है फॉर देयर CTC एंड देयर मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स. एंड इसी में क्या हो गया कि ये जो क्वालिफिकेशन साइकिल होती है दैट इज़ वेरी लॉन्ग, राइट. सो अगर मुझे एज अ प्लेयर अप्रूव होना है तो फिर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो ये कंपनी के पास ऑलरेडी मोट है. एंड अनदर थिंग दैट इज हैपनिंग इन द ट्रांसफॉर्मर इकोसिस्टम इज ना, इसकी द डिमांड इज सो मैसिव दैट इफ यू वांट टू बिल्ड or if you want to buy a transformer right now, you'll have to wait at least 1.5 to 2 years and also 3 years in some very high value specialty transformers. So this is just to show the kind of demand supply mismatch there is.
And if you're a transformer player, what will you do? Will you rather go for a newer player and a risk quality, or will you go for a more trusted player like KSH International that has been in the market for so long, and jiske that is already approved for supplying to your companies like PGCIL, NTPC, all of these companies. Of course, KSH International, right? So this is another mode that the company has. एंड कंपनी के एक तो कॉम्पिटिटर भी है जैसे राम रत्ना वायर्स है, बट केसेज का क्या है कि एक तो कंपनी अप्रूव्ड है बाय PGCIL वगैरह, एंड कंपनी का जो मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स है दैट इज काइंड ऑफ लाइक द स्पेशलिटी और द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द रेवेन्यू. सो राम रत्ना वायर्स कैसा करता है, वो बेसिकली कमोडिटी प्रोडक्ट काइंड ऑफ बनाता है, केबल्स एंड वायर्स वगैरह. राम रत्ना वायर्स दैट इज बेसिकली लाइक अ कमोडिटी प्लेयर, एंड दिस इज मोर ऑफ अ specialty high value added kind of a player. So we have established the fact that there's a massive demand for transformers, and accordingly तो फिर magnetic winding wires and CTC को भी एक बहुत अच्छा डिमांड आएगा. लुकिंग एट द प्रेजेंटेशन व्हाट वी हैव इज दैट कि ये इंडस्ट्री बेसिकली होती क्या है मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स की. तो अगर आप देखोगे एवरी इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर और अल्टरनेटर नीड्स टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड आती है टू वो प्रोडक्ट को वर्क करने के लिए दैट इज सप्लाइड बाय मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स, and that is exactly what KSH International makes. And without winding wires, no transformer can step up voltage, no motor can spin, no alternator can generate power, and this is absolutely essential for electrical economy. And हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरा जो ये AI की वजह से पावर का नीड आ रहा है वो उसके लिए ट्रांसफॉर्मर्स लगेंगे. पूरा जो बेसिकली द एंटायर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में जो हो रहा है इसका ये कंपनी से डायरेक्ट बेनिफिशियरी. And even if you look at it, कंपनी का मार्केट साइज भी अच्छा है. इट इज ग्रोइंग एट 15 to 18% कैगर दैट इज ड्रिवन बाय पावर सेक्टर. देन इंडियन ट्रांसफॉर्मर मार्केट इज डूइंग वेल, एंड कंपनी का रेवेन्यू भी. एंड इवन इफ यू लुक एट इट, कंपनी को रॉ मटेरियल्स किसी सप्लाई करते हैं फ्रॉम बेसिकली कंपनीज लाइक हिंडाल्को, वेदांता. देन कंपनी के कस्टमर्स कौन हो गए, कस्टमर्स लाइक भारत बिजली, भेल, हिताची एनर्जी, जी वर्नोवा, वर्जीनिया ट्रांसफॉर्मर, जॉर्जिया ट्रांसफॉर्मर. दीज आर द टू बिग कंपनीज इन यूएस. लाइक इंडिया में कैसे हिताची एनर्जी एंड जी वर्नोवा है, बेसिकली यूएस में दीज आर द टू बिग कंपनीज. एंड कंपनी इनको ये अपना मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर सप्लाई करती है. एंड एप्लीकेशंस हो गए पावर ट्रांसफॉर्मर्स, देन ईवी मोटर्स में भी हो गया. इंडिया में जैसे ईवी का अडॉप्शन बढ़ रहा है, दैट कैन बी अनदर इंटरेस्टिंग ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी. Then it is used in HVAC, generators, motors, and all of these different types of applications. And even if you look at the value chain, what happens is copper is bought in by the company. Company does its जो भी value add करना है, then it supplies to your transformer OEMs, and then transformer OEMs actually give it to your data center projects or your power grid, NTPC, all of the power T&D capex that is going on. एंड अगर आप कॉम्पिटिटर देखोगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के क्लोज, देयर आर ओनली टू कॉम्पिटिटर्स. फर्स्ट इज अपार इंडस्ट्रीज विच इज लाइक अ वेरी बिग प्लेयर इन दिस, एंड राम रत्ना वायर्स. एंड एज आई मेंशन्ड, राम रत्ना वायर्स इट इज मोर ऑफ अ कमोडिटी प्लेयर. इट अर्न्स लाइक 3 to 4% EBITDA margins, whereas this does like a 7 to 8% EBITDA margins. सो ये तो क्या कि कंपनी का बिजनेस मॉडल हमको समझ रहा है कि सस्टेनेबल है, इतने इजीली रिप्लेसेबल नहीं है, एंड डिमांड भी देयर इज अ लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ फॉर डिमांड एज वेल. एंड इवन इफ यू लुक एट इट हाउ द मनी इज मेड इज फर्स्ट इज पावर सेक्टर कैपेक्स, PGCIL, ईवी मोटर्स का डिमांड, देन रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड, पावर ट्रांसफॉर्मर्स का डिमांड, रेलवेज, ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स. एज वी लुक्ड एट Hind Rectifiers के वीडियो में also discussed कि Hind Rectifiers is doing a backward integration into CTC as well because it's a very key raw materials. and उन्होंने भी कॉन में बोला था कि CTC की शॉर्टेज चल रही है. सो जब भी कोई प्रोडक्ट की शॉर्टेज चलती है तो फिर जो कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है उसको एक प्राइसिंग पावर मिलता है. सो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज को कैसे एक प्राइसिंग पावर मिल रहा है कि भाई तेरे को लेना है तो ले, वरना मेरे पास और 100 कंपनीज पड़े जो मेरे से माल लेना चाहता है. सेम थिंग विद KSH इंटरनेशनल. इतना बड़ा शॉर्टेज चल रहा है कि कंपनी हैज़ अ गुड प्राइसिंग पावर. And why KSH? Because it has expertise in ultra precision manufacturing for large and HVDC transformers, and it is a leading manufacturer. plus EV पे कंपनी का फोकस है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, एंड इट इज़ अ सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड वेंडर टू लीडिंग ग्लोबल OEMs. So these were the good factors for the company. And here you can just look at the kind of clientele base the company has. Companies like BHEL, Hitachi, G Vernova, CG Power, Siemens, or Atlanta Electricals, Indotrek, all of the big transformer companies is at clientele for the company. And this is basically the different product portfolio. You guys can just pause the video to understand कंपनी एक्चुअली बनाती क्या है. एंड इसमें भी स्पेशलाइज मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द रेवेन्यू. सो जो हाई मार्जिन और फिर थोड़ा सा वैल्यू एडेड स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, that is 75% of the business, which is again a very good factor for the company. And now looking at the better insights for the company, copper price is a massive revenue multiplier and not margin driver. So अगर आप देखोगे कि कंपनी ये जो पूरे केबल्स एंड वायर स्पेस में है, why we look at EBITDA per ton is exactly because of this reason. If you look at it, KSH revenue doubled from
1928 crores to 3000 in 1 year, and partly due to copper price increase. Copper is approximately 70 to 75% of revenue, and a 20% rise in copper price equals a 15% revenue growth with near zero margin impact. And that is why you guys must separate your volume growth from your actual sales growth, because as we know, revenue component में there's one your volume growth and second is the value growth. एंड अगर कॉपर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर व्हाट हैपेंस इज आपकी वैल्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखती है. सो हमको वैल्यू ग्रोथ सेपरेट करके देखना है कि कंपनी का एक्चुअल प्रोडक्ट कितना बिक रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ कितना है. एंड इसी की वजह से इफ यू लुक एट इट, कंपनी के EBITDA मार्जिन्स इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी. व्हाई? बिकॉज इफ यू लुक एट इट, मार्जिन्स का फॉर्मूला क्या होता है? your EBITDA upon your revenue. But when copper prices increases ना, the revenue increases but your EBITDA does not increase that much. That is why अगर denominator ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके EBITDA margins अपने आप collapse होंगे. That is why if you look at it, company used to do approximately 7 to 8% EBITDA margins, but now it's contracted to 6%. Why? Because copper की price increase हुआ है and वो EBITDA में reflect नहीं होता. That is why denominator effect की वजह से your copper की price increasing leads to a decrease in margin. That is why it is very essential that you look at the EBITDA per ton and not the actual EBITDA margins. And you guys can also refer to this presentation right here, company presentation, to understand why we should look at the EBITDA per ton and not the margins, and how copper prices have an impact on the revenue and profitability of the company. As we mentioned, EBITDA per ton is the metric, not EBITDA margin. At EBITDA per ton in FY26 versus 52,000 in FY25, that's a 30% improvement in EBITDA. That's why we look at EBITDA per ton and not EBITDA margin. Like FY26 it was 67,000 EBITDA per ton, and which was 52,000 in FY25. That is approximately 30% growth. But EBITDA margin fell from 6.3 to 6.1. Why? Because copper prices went up, denominator बढ़ेगा तो आपका EBITDA margin कम दिखेगा. Next coming is CTC margin is 2 to 3 times standard wire. A CTC transposed conductor for a 765 kV has a EBITDA of 1,20,000 to 1,50,000 as compared to a standard round wire at 35 to 40,000. And ये जो 75% का specialized mix है, that is what protects KSH from commodity wire competition. And another risk, not a risk but a kind of इसका business ही ऐसा है, is that working capital is approximately 60-70% of the revenue. Why? Because copper is the main raw material and copper बहुत volatile होता है. So copper procurement requires upfront payment or letter of credit, and finished goods to major OEMs have a 60 to 90 day credit terms. मतलब मेरे को जो माल लेना है that मेरे को कैश में लेना पड़ेगा, बट जो सप्लायर पैसा देगा वो एक 60 to 90 days के बाद देगा. So that's why there's a working capital is very high in this company. But you have to look at it कि अगर मतलब हमेशा कंपनी का वर्किंग कैपिटल हाई, then that's just the nature of the business. That's not necessarily a bad thing. बट अगर आप देखो कि स्ट्रक्चरली कंपनी का वर्किंग कैपिटल बहुत बढ़ रहा है विदाउट एनी रियल ग्रोथ इन द बिजनेस, देन दैट्स अ नेगेटिव साइन. एंड कंपनी का यूटिलाइजेशन, व्हेन वी लुक एट द कैपेसिटी एक्सपेंशन, वी लुक एट कि कंपनी का ये क्वार्टर में यूटिलाइजेशन कम था, बट दैट्स बिकॉज कि कंपनी की नई कैपेसिटी लाइव आई है. एंड वेन एवर नई न्यू कैपेसिटी कम्स लाइव, ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही कंपनी विल रीच 90% यूटिलाइजेशन. इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, एंड दैट इज वाई कंसोलिडेटेड बेसिस पे योर कैपेसिटी सीम्स अ बिट लो or your utilization seems a bit low. And another very good positive for the company is that export ka premium, it earns approximately 35 to 40% premium over domestic pricing, and plus rupee depreciating, the company will benefit even more. Even though the company hedges, but there's a small tailwind behind it, and KSH is the only Indian CTC exporting to US transformer majors like a Virginia transformer or Georgia transformer, and this pricing power is durable because of what the kind of supply shortage that is going on. एंड कंपनी का मार्केट पोजीशन अगर आप देखोगे तो कंपनी इज नंबर 3 बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एंड कंपनी सेकंड पोजीशन पे आ रही है, एंड नंबर 1 CTC एक्सपोर्टर विद 35 to 40% डोमेस्टिक CTC मार्केट शेयर एंड एक्सपोर्टिंग 24 कंट्रीज. एंड एज यू मेंशन बिफोर, कंपनी का मोट किधर आता है? CTC में आता है. CTC में कंपनी हैज अ 5-star मोट, सो एक्सपोर्ट रिलेशंस दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. देन स्केल एंड कस्टमर बेस, दैट इज ऑल्सो अनदर मोट. कॉस्ट एडवांटेज, दैट इज कंपेरेटिवली वीक. सब लोग कॉपर एक ही प्राइस पे खरीदता है. अगर आपकी कंपनी थोड़ी बहुत बड़ी है, देन यू कैन गेट अ बिट ऑफ डिस्काउंट, बट कॉस्ट एडवांटेज इतना नहीं है कंपनी को. नाउ दैट वी अंडरस्टूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द की मेट्रिक्स और कौन से KPIs है दैट वी मस्ट लुक एट व्हेन एनालाइजिंग दिस कंपनी. So first of all, we have EBITDA per ton, as we mentioned, the core value provider. Why we look at it is because it strips out the copper का जो price का increase है, that is जिसकी वजह से revenue increase होता है, EBITDA margin compress होता है. So we are ignoring that. If you look at it, FY24 में company stood approximately 30,000 EBITDA per ton, and that has improved to almost 67,000, and
Q4 में तो 74,000 EBITDA per ton कर रही है कंपनी. एंड सेकंड इज द वॉल्यूम ग्रोथ. एज यू मेंशन कि एक तो अपना रेवेन्यू में क्या दिखता है, वॉल्यूम ग्रोथ दिखता है, वैल्यू ग्रोथ दिखता है. सो हमको एक्चुअली देखना है वॉल्यूम ग्रोथ कैसे हो रहा है. क्यों दिखता है? बिकॉज इट शोज द ट्रू अंडरलाइन डिमांड सिग्नल इंडिपेंडेंट ऑफ कॉपर प्राइसेस. सो Q1 में कंपनी टू डू अप्रोक्सीमेटली 6,500 का वॉल्यूम, and Q4 में company is doing 7,600. So if you see, company is consistently growing its EBITDA per ton as well as its volume growth north of 20-25%. That is why the company is very interesting to me. And with the new capacity coming up from 14,000 to 30,000 metric tons, FY27 का volume can reach approximately 35 to 38,000 metric tons, which is a 25 to 30% growth. Another thing we want to look at is the export revenue and growth, because we saw it has a 35-40% pricing power. So as export का share increases, my absolute profitability also increases. And also capacity utilization and expansion. कंपनी की नई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज लाइव. सो थोड़ा बहुत कम यूटिलाइजेशन दिखेगा, बट कंसोलिडेटेड लेवल पे थोड़ा सा कम दिखेगा. बट एज द न्यू कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन इंक्रीजेस कंसोलिडेटेड लेवल पे ऑल्सो माई यूटिलाइजेशन विल सीम गुड. So this was all about what are the key metrics that we have to track, and this is something that we have to do on a quarterly basis. EBITDA per ton हो गया, वॉल्यूम ग्रोथ हो गया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया, ये सब हमको हर क्वार्टर पे ट्रैक करना है if the company is on track. Now moving on towards the end part of the video, we'll look at what kind of valuations or numbers the company can do, what kind of projections are coming out, and then we'll do a result analysis, and other we'll look at the valuations and projections in detail. So if you look at it, in the base case we're assuming the company can grow its volume by 25%. एंड ये हमने कैसे अज्यूम किया है कि पास्ट में भी कंपनी अप्रोक्सीमेटली 25% 30% से ग्रो करती थी वॉल्यूम्स. सो वी कैन अज्यूम कि विद द न्यू कैपेसिटी कमिंग अप कंपनी कैन आराम से डू दिस काइंड ऑफ नंबर्स. एंड वाई? बिकॉज सुपर एट 40-45% यूटिलाइजेशन, एक्सपोर्ट भी ग्रो करता है, एंड कंपनी टारगेट कर रही है EBITDA per ton ऑफ 75,000, विच इज अचीवेबल. बिकॉज इफ यू लुक एट इट, Q4 में कंपनी डिड 74,000 ऑफ EBITDA per ton, सो दैट इज ऑल्सो अचीवेबल. उससे रेवेन्यू कम्स अराउंड 4,200 करोड़, EBITDA कम्स अराउंड 265 करोड़, PAT comes approximately 165 crores, and at a market cap of 5,000 crores, we get approximately 30 times earnings, which is fair. Right? If you look at it, company is growing by 25-30%. So, PEC के according भी देखोगे आप, तो फिर that's not a very big issue. Company is a good bet available at the kind of growth and current valuations. And even if you look at it, I think trailing 12 months where company is trading at 40-50 times. So the company is trading at 1.5 to 1.8 times PEG ratio on a trailing 12 month basis as well. एंड बेस बुल केस में देखोगे तो फिर कंपनीज अवेलेबल एट 24 टाइम्स, एंड बेयर केस में कंपनी बिकम्स अ बिट एक्सपेंसिव एट 43 टाइम्स. एंड दिस इज द मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन, एंड मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है एंड काइंड ऑफ द की कोट्स. एंड मैनेजमेंट ने सेड दैट दे आर ऑन ट्रैक टू एग्जिट FY27 विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ almost 60,000 MTPA. HVDC CTC first signals a structural shift in our product portfolio toward the highest value product transformer application. And if you look at the results were also phenomenal. Company had very strong revenue growth as well as EBITDA growth. And reasons किधर से आ रहे थे? First was CTC का demand, then export acceleration, then new capacity coming up, then copper price inflation that also aided to your revenue. So जब copper prices decline होंगे, so that time पे revenue थोड़ा सा subdued दिख सकता है, but we have to look at the volume growth. Absolute volume growth देखना is very important at that time. And if you look at the kind of export growth, the company is targeting approximately 1,000 crores of export in FY27, and the kind of EBITDA per ton improvement the management is targeting approximately 75,000 आराम से कर सकते हैं company. And end users क्या है? First is your HVDC and high kV transformers. Then we have your extra high voltage power transformers. Then we have your export. Then we have your railways, and all of these things we mentioned before. And management के commentary भी you guys can read here कि export growth accelerated 92% year on year in Q4 FY26. So you can see increased demand from new countries and new transformer OEMs in existing markets. The US transformer replacement cycle and European grid modernization are structural tailwinds. जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है, वही मैनेजमेंट के एक्चुअल वर्ड्स है. And as always, you can see the kind of opening remarks the company made and a summary of the important question and answers from the con calls. You guys can pause the video and take a screenshot if you want, and just kind of read this, the kind of metrics that you have to track going forward as well. With that, we look at the kind of pros and cons the company has. If you look at it, company के pros क्या है? It is the only HVDC or 765 kV CTC manufacturer that is a genuine moat, and company exports to US transformer majors. And company has premium pricing in that. Capacity is doubling in approximately 3 years. 60,000 MTPA capacity जा रही है कंपनी की. EBITDA per ton is improving every quarter. इंडियन पावर सेक्टर की जो सुपर साइकिल चल रही है, पावर ग्रिड का जो कैपेक्स चल रहा है,
that is a demand for a long period. Then if you look at the cons that the company has, एक क्या है कि company has low EBITDA margins, but EBITDA margin is not a true representation of its profitability. As we mentioned, EBITDA per ton is, and working capital intensive है business. Copper price की volatility has an impact on the business. IPO was listed at a discount, doesn't really matter इतना because the market in general was pretty lean at that time, so that affected its listing. एंड सुपर का प्लांट अगर थोड़ा सा स्लो हो गया था, जैसे ये क्वार्टर में थोड़ा सा स्लो हो गया था, वो अगर आगे करता है देन दैट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. So just to summarize what we covered in the video, first we understood कि transformers में there's a huge demand supply shortage, and why there's a need for magnetic winding wires, why the transformer OEMs won't compromise on the quality of CTC or magnetic winding wires. Then we looked at a more company specific analysis. We looked at what is the kind of moat that the company has, what kind of entry barriers the company has. Then we looked at what are the key metrics to track going forward. Then we looked at the capacity expansion plans of the company. Next we also looked at the valuations and projection section, and we looked at the pros and cons of the company as well. With that, my final verdict is that I am invested in this company for a long, I think Q3 Q4 के बाद I started adding this company, so that's just a standard disclosure, not a buy or sell recommendation. But the company seems fairly valued at this point as well. Company is near its all-time high, but as we looked at the valuations, company is trading at 31 times FY27 earnings, which is fair given the company can grow by 25-30% in FY27. So all in all, a very fairly valued company and a direct beneficiary of the grid modernization, renewable cycle, and the huge power T&D capex that is going on in India. With that, I hope you guys liked the video, found it informative, found the analysis informative, and if you found it informative, make sure to like the video, comment down below what was your favorite part of the analysis. Are you a shareholder or are you tracking this company? What are the metrics that you are looking for? And also subscribe to the channel for more such informative and deep dive analysis. And with that, I'll see you guys in the next one. Thank you.